मुजफ्फरपुर नियमित हर रविवार को शाम में 4 बजे से 6 बजे तक एक नेशनल इंटरनेशनल वेबिनार आयोजित करता है। आदरणीय विमल कुमार सांडिली साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम सर, नमस्कार। और आज के का कार्यक्रम हमारा जो है उसमें विषय है शंकराचार्य ही लाइफ एंड मिशन। और हमारे मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर गोदावरी मिश्रा, प्रोफेसर एंड डीन, स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, फिलोसफी एंड कंपैरेटिव रिलीजन, नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बिहार, इंडिया। और हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर आरसी सिन्हा, नेशनल फेलो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, शिमला एंड फॉर्मर चेयरमैन आईसीपीआर, न्यू दिल्ली। हमारे कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर हैं परम आदरणीय स्वामी भावात्मानंद महाराज, सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम मुजफ्फरपुर। और आज के कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन करेंगे आदरणीय महाशंकर प्रसाद जी, जो हमारे विवेकानंद स्टडी सर्किल के वरिष्ठ सदस्य हैं और पूर्व प्रधानाचार्य हैं और हमारे सभी कार्यक्रमों के सक्रिय भागीदारी देने वाले सदस्य हैं। आदरणीय स्वामी भावात्मानंद महाराज भी कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं। और अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज का जो विषय है शंकराचार्य जी लाइफ एंड मिशन, हम लोगों को कई बार स्वामी भावात्मानंद जी ने बताया हुआ है कि शंकराचार्य जी का जन्म 788 ईसावाद हुआ था कलाडी, केरला में। और वे जन्मजात ही विद्वान थे। 2 वर्ष की आयु से ही संस्कृत बोलना और लिखना जानते थे। 4 वर्ष की आयु से वेद पाठ करना शुरू कर दिए थे। उनके लाइफ का मिशन अद्वैत वेदांत के मर्म को प्रचार प्रसार करना था, जो आत्मा को एकात्म और निर्गुण ब्रह्म का कंसेप्ट देता है। वे संपूर्ण भारत में घूमकर विद्वानों से शास्त्रार्थ किए, मठ मंदिर की स्थापना की। दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा पीठ, पश्चिम में द्वारिका पीठ, उत्तर में ज्योतिर्मय पीठ और पूर्व में गोवर्धन पीठ मठ की स्थापना उन्होंने किया। इस विषय पर विस्तार से आदरणीय गोदावरी मिश्रा साहब हम लोग को जानकारी देंगे। यह प्रारंभिक जानकारी परमादरणीय स्वामी भावात्मानंद महाराज हम लोग को स्टडी सर्किल में बराबर दिया करते हैं। तो मैं अब स्वामी भावात्मानंद महाराज से निवेदन करता हूं कि वे आदरणीय गोदावरी मिश्रा जी एवं अन्य हमारे प्रतिभागी का स्वागत करते हुए विषय प्रवेश कराने की कृपा करेंगे। स्वामी भावात्मानंद महाराज, सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के कार्यक्रम के लिए। विशेष करके मिश्रा जी को बहुत दिनों से मैं खोज रहा था, ढूंढ रहा था आज के इस विषय पर उनके वक्तव्य को सुनने के लिए। और हमारे बीच विमल कुमार सांडिल्य जी, प्रभात तिवारी जी, महाशंकर प्रसाद, विजय कुमार और साथ ही देवेंद्र कुमार, हेमंत मिश्रा और विभिन्न विद्वान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और मैं समझता हूँ 2-4 मिनट में और भी सारे व्यक्ति इसमें जुड़ जाएंगे। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दयानंद जी मिश्रा जी भी बड़े इंटरेस्ट लेते हैं हमारे इन कार्यक्रमों में। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और विशेष करके मैं पुनः प्रोफेसर गोदावरी जी के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अल्प समय में हमारे इस अनुरोध को, रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। उनकी अत्यधिक व्यस्तता रहती है, उस एक नए विश्वविद्यालय में जुड़े हुए हैं और एक बड़े पद पर आसीन है और उनके रेगुलर क्लासेस होते रहते हैं, बावजूद इन्होंने हमारे इस अनुरोध को ठुकराया नहीं, स्वीकारा। इसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। यद्यपि मैंने प्रोफेसर साहब से भी अनुरोध किया था एक विषय देने के लिए, किंतु मैं उनसे विषय नहीं ले सका और सामान्य रूप से मैंने अपना ही विषय उनसे अनुरोध कर दिया। वह विषय था भगवान शंकराचार्य की जीवनी और उनके संदेश। भाइयों, आप जानते हैं शंकराचार्य के विषय में कहा गया बड़े विद्वान महापुरुष थे, जिन्होंने अद्वैत की डंका बजाई संपूर्ण भारतवर्ष में। जैसे भगवान बुद्ध के आने के बाद भारतवर्ष में उपनिषद और वेदों में, धार्मिक जगत में एक नई क्रांति हो गई, ठीक इसी तरह से भगवान शंकराचार्य के आने के बाद एक नई क्रांति का शुरुआत हुआ। वह क्रांति थी हमारी सांस्कृतिक, हमारी आध्यात्मिक क्रांति थी। हो सकता है शंकराचार्य के विचारों से उसके बाद के विद्वान जैसे मध्वाचार्य या अन्य विद्वान रामानुज आदि 100%
उसे उन्हें मान्य न थे, बावजूद इसके उन लोगों ने शंकराचार्य के ही विचारों से अलग होकर के या उनके विचारों में थोड़ी सी कमी बेसी जोड़ करके घटा करके उनके विचारों को आगे बढ़ाया। इसलिए एक आध्यात्मिक क्रांति थी। और आज का जो हिंदू धर्म है, इस हिंदू धर्म का अधिकांश भगवान शंकराचार्य के द्वारा दिया गया है। आज हम जिसे हिंदू धर्म कह रहे हैं, इसके विषय में एर्नोल्ड टॉइनबी का कहना है कि यह हिंदू धर्म सबसे नवीन धर्म है, सबसे युवा धर्म है। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि सनातन धर्म का यह एक नया रूप है, जिसकी उत्पत्ति इस्लाम धर्म के बहुत बाद में हुई है और जिसके जन्मदाता हैं भगवान शंकराचार्य। इस दृष्टिकोण से हमारा धर्म, वेदांत का धर्म, अति नया धर्म है। नया धर्म इस मामले में कि इस धर्म में तार्किकता कूट-कूट करके भरी हुई है। जिस तार्किकता का प्रथम आनयन भगवान बुद्ध ने किया था, वेद के विरोध में जाकर के भगवान शंकराचार्य ने ठीक इसे उलट दिया और वेद सम्मत तार्किक रूप से इस धर्म को उन्होंने प्रचार प्रसारित किया। शंकराचार्य के विषय में कहते हैं, अष्टवर्षे तो चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रविद, षोडशे तु कृतो भाष्यो, द्वात्रिंशे मनुरभ्यगत। 8 वर्ष में वो सभी शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। 16 वर्ष में जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, सारे धर्म ग्रंथों के ज्ञाता और उस पर उन्होंने विभिन्न प्रकार के लेखन समाप्त किए और 32 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ये उनकी विद्वता का यह एक श्लोक है। दूसरा श्लोक है उनके सिद्धांत को लेकर के, जिसे कहा जाता है अर्ध श्लोकेन प्रवक्ष्यामि, अर्ध श्लोकेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। यद्यपि श्लोक की विभिन्न रूप से व्याख्या हुई है, तथापि मैं आशा करता हूँ इनकी व्याख्या और भगवान शंकराचार्य की जीवनी के संपर्क में आज हमारे प्रमुख वक्ता श्री गोदावरीश मिश्रा जी अपने विचारों को रखेंगे और हम उनसे लाभान्वित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर गोदावरीश मिश्रा जी कृपया ज्वाइन करें। आदरणीय गोदावरी मिश्रा जी से निवेदन है कि आपका वक्तव्य 60 मिनट का होगा। आवश्यकता अनुसार आप 15 मिनट और अपने वक्तव्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तदनुरूप हम लोग आपसे इंटरेक्शन करेंगे, हमारे पार्टिसिपेंट आपसे इंटरेक्शन करेंगे। और एक और निवेदन है कि हमारे कार्यक्रम में गोल्डाना जुवानकी जी नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग है, तो अधिकांश शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में होने से उनको भी समझने में सुविधा होगी। और इंग्लिश जिसे हिंदी और अंग्रेजी मिश्रित कहते हैं, निवेदन है आदरणीय गोदावरी मिश्रा जी साहब। और आपका समय शुरू होता है, अब अपना वक्तव्य शुरू किया जाए। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। Most esteemed Swamiji, Professor Singh ji, Professor Dayanand Mishra ji, I don't know whether he is a professor, but like Professor Mishra ji, all the scholars interested in ancient Indian philosophy and tradition, those who have participated in this evening online session, मेरे हर लोगों के प्रति आभार और नमस्कार करके 1 घंटा के लिए मेरी वक्तव्य आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट, माई माइंड गोज बैक टू मिथिला that has produced another Shankara like Vachaspati Mishra. And today I would like to start from how Vachaspati, salutes Shankara, the Shankara's tradition. Vachaspati Mishra, in his
Bhamati, he says, first he says he praise Vyasa, then he salutes Shankara. He says, Natva Visuddha Vijnanam Shankaram Karunalayam Bhashyam Prasanna Gambhiram Tat Pranitam Vibhajyate. So he says that with this I am taking a very humble attempt to, Vachaspati Mishra says, to write a commentary on the Vyasa, Shankara, who has written the Bhashya, Bhashyam Prasanna Gambhira, very beautifully worded with profound meaning and brilliant diction. The language is so good and meaning is so deep. Prasanna and Gambhira. Tat Pranitam Vibhajyate. I am writing a commentary on that Shankaracharya. Okay. Who is Shankaracharya? Vishuddha Vijnana. He is the pure consciousness. And what is the other adjective of Shankara? Karunalayam. This Karunalayam is a great adjective of the teachers, those who have unmuktamushti, with open-handed, presented the tradition of liberation to mankind. And then Vachaspati Mishra says, Acharya Krutiniveshanam api avadhutam vachaha asmadadinam rathyodakamiva ganga pravahapataha pavitrayati. He says that where am I to write a commentary on Shankara, such a great man? Mine is like the water from the streets, and Shankara's writing is like the Ganges, Ganga. गंगा जैसे वो है और मैं नाला का पानी जैसे ऐसे हूं, रथ्योदकम। फिर नाला का पानी जब गंगा में मिल जाती है तब नाला पानी होके नहीं रहती। सो ही इज टेलिंग, मेरी जो भाषा है, even the words of people like us, when they are immersed in the words of the great teacher like Shankara, become extraordinary. Like they purify like the water of the streets when they go and fall into the flow of the Ganga. Acharya Krutiniveshanam api avadhutam vachaha asmadadinam rathyodakam Ganga pravaha pataha pavitrayati. I just wanted to say that if there is one person who has done so much in such a short time in his life, it is Acharya Shankara. And done not for himself, nothing for himself, for others. Like all those who have done for worked for others, and how he has worked for others. He has worked for others without being associated with, without owning two things. I am doing or it is mine. Aham mama abhimana rahityattvena. Being devoid of these two ideas, two concepts that all of us are associated with, Shankara has done so much within such a short time. Brought everything, brought the country geography he gave the geography of the country. One country, this is the country. He gave culture to the country. He brought back the Vedas to the Indians. He made every house as a temple in the country. Every house will have Pancha Upachara Puja by having 5 stones collected from 5 different rivers. Each house got reverberated with the idea of divinity. It is not India, wherever.
The thinking that your house is not an ordinary house, it is a part of the cosmos. That idea, I as a part of the cosmos, my house is a, I'm not staying in the a small house. I'm staying in the universe. I'm the, my house is the Vishwa, universe is my house. I'm the son of the earth. And my father is the ether. That idea was brought to, to, to us by Shankara. Before I go to today's talk, Swamiji, is not a biography in the ordinary sense of the term, that when he was born, when he went where, all that. This is not what I'm going to read. It is a philosophical biography. टुडेस दार्शनिक जीवनी जो है, ये इसके बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि we all know he was born in Kerala and all that. I will speak now and then something, but it will be a philosophical biography. This is the topic I wanted to give you, but you have given a beautiful topic which takes everything together. I'm so thankful to you. Thankful also that you facilitated my that time to talk, think about Acharya Shankar. First thing that I would like to present before this great audience of Mithila, that is which is with the Vidya Bhumi, that Shankara is not the first to speak about Advaita. Shankara is not the only one, like he's not the first to start Advaita. And many people think that Shankara is the propounder of Advaita Vedanta. Shankara is the founder of Advaita Vedanta. That is not so. My first submission to all of you is the tradition has given the names of large number of teachers, like starting from Mahavishnu, Narayana, Padmabhuva, Vashishta, Shaktim cha Tatputra Parasaram cha Vyasam Sukam Gaudapadam Mahantam Govinda Yogendra Mathasya Shishyam Sri Shankaracharya Mathasya Padmapadam cha Hastamalakam cha Shishyam Tam Totakam Bhartikakaramanya Asmad Gurun Santatamanatwasmi. This is the beginning of the tradition, Advaita tradition. Everybody reads this verse just to say Shankara is not the first one. Shankara is only the, the rebuilder. He's building a, he's painting a building, so to say, building of Vedas. What is the Vedas? As I told you, it is not a hagiographical biography, like just to give the dates and all. It is a philosophical biography, that which I am bringing before you. So this is the first thing. Shankara is not the first one who has propounded Advaita Vedanta. He is the penultimate writer. He is the penultimate proponent of the Advaita. That is it. Number two, like he the only one, like he brought back the Upanishadic ideas to the people, saying all that the Upanishad has is goes to the acme of human thinking. It can come in different streams. If such a thing can come without Upanishad, that is also all right, because there are examples in our tradition from the from the from the Vamadeva, from the mother's womb. Aham Surjasya Aham Manu. He says, I'm a liberated man. How does he say? It can happen. We are not book-centric religion. Book is important. Book is necessary for us, but not sufficient. Book has to be worked out for getting the knowledge. That is Shankara's presentation. And I wanted to say, Shankara is the proponent of Advaita Vedanta. What is Advaita? I will come to that little later when time permits. Professor Singh is the holder of time. He's the timekeeper. So, so, so the tradition of Advaita was there
other schools also, other non-Vedic schools also. Okay, a few centuries, not before Upanishads, after Upanishadic period, there are many schools who claimed that they are also talking about Advaita. For example, a few centuries before Shankara, there are thinkers like Maitreyanatha, Vasubandhu, Dharmakirti, like they are all Buddhist Vijnanavadins. And they claimed that they were also Vedantis. They are also Advaitins. We are talking about Advayavada. The same thing with Nagarjuna and others in the Buddhist school. They also said, they claimed that they were speaking about Advaya. This idea has been clearly pronounced in a 4th century Jaina work called Amara Kosha, where Amarasimha writes, what are the names of the Buddha? One of the great names of the Buddha is Advayavadi. He is talking about non-dualism. The text says, Sarvagya Sugatva Buddha Dharmarajas Tathagata Samantava Advayavadi Vinayakaha. Okay, so Advayavadi Vinayaka. So he is Advayavadi. So this is one. These are the two Buddhist traditions. There is a Prajna Paramita tradition, which also composed much before the Christian era, and repeatedly they are using the term Advaya, which Nagarjuna takes. This is the second hard tradition of Advaya. The fourth tradition of Advaya is spoken of by a pre-Shankara grammarian, who is also an Advaita in his own way, Sabdadvaita. He is called as Bhartrhari, who in his Vakyapadiya, he develops the concept of Advaya. Okay, it is said that he was a Upanishadic scholar. Sorry, he became a Upanishadic scholar after renouncing his Buddhist faith. And about same time, the Gaudapada, the grand teacher of Shankara, he writes a text, Karika, on Mandukya Upanishad. His claim is this. He says, all that the Buddha speaks in so many words, so many treatises, the essence of the Buddha can be found in the thinking of the smallest of the Upanishads, that is Mandukya Upanishad. And he uses a language, जो भाषा का प्रयोग किया है वो विज्ञानवाद बुद्धिस्ट का भाषा है. एंड विज्ञानवादियों का जो आइडियाज है, जो कॉन्सेप्ट्स है, उसको भी उन्होंने अडॉप्ट किया. जो माया, अविद्या, ये सब जो बुद्धिस्ट का कॉन्सेप्ट्स थे, उसको सब इनकॉर्पोरेट करके चतुष्कोटि को बनाया. ये है, ये कह नहीं सकते, ना है, ये कह नहीं सकते. नाइदर exists nor does not exist, exists or not, neither. Four things we cannot speak about as far as when we speak about Advaita. This is what Gaudapada does. And Gaudapada, and after him the whole Advaita tradition incorporated what Gaudapada wrote, and Gaudapada seems to have got the idea from Nagarjuna. So as I told you, and he gave a framework for the future philosophizing in Advaita Vedanta, which Shankara manifests. Shankara makes it, enlarges. Okay, and that idea is called as Ajativada. There is no origination. And there is no origination. This idea became the
idea called Vivartavada according to Shankara. Shankara gives a new nomenclature for this. He says Vivarta. The Ajativada of Gaudapada becomes Ajativada of Nagarjuna and Gaudapada becomes Vivartavada. I am giving a philosophical history of Advaita Vedanta with Shankara at the center. Now, Shankara had such a great reverence for this, his Paramaguru. His Paramaguru, I told you in my last lecture also, sometimes I was telling you, I do not know whether to this audience or not. I always felt that Gaudapada comes from somewhere in Goa. Today also that Mathagrama, Maudgama is the place where Gaudapada in all possibility, in all probability, Gaudapada had his ashram in Goa. Mathagrama, which is Maudgama today. And Gaudapada was a, as I told you, the Vachaspati Misra, Karunakaram, the Mahakaruna and Mahapragya of the Buddha is manifesting in different languages. See, we are carrying Buddhism is not a different religion. Buddhism is nothing like the making the Buddhism as a different language. We are cutting off half of the religious body in India. We did there not. They are one. Wherever I go, I tell this. What? So what? So the Jativad and Vivartavad are going side by side. What is the difference? I'll come to that. And I wanted to tell you how much Gaudapada revered Buddha. He says, Tambande Tvipadambaram. I salute to that great man who has given all these things to us. We Mahapragya and Mahakaruna Buddha. He says, but Buddha did not have all these things. He did not approve the certain things of the Buddha. He says, all this is there in the smallest of the Upanishad, the Mandukya Upanishad. Why you go to such a lot of literature thinking like breaking your head? Mandukya can give you everything. He says, now Shankara takes to Gaudapada and what he says, as I told you, it's a philosophical biography. And Shankara says, Prajna Vaishakha. Prajna Vaishakha Vedas Chubhita Jalanidhi Veda Nabro. Sorry, Prajna Vaishakha Veda Chubhita Jalanidhi Vedana Tarastaha Bhutan Nyalokya Magnan Abhirata Janana Graha Ghore Samudre Karunyat Uddadhara Amrita Mida Amaraihi Durlabham Bhuta Hetoho Yastam Pujyati Pujyam. पूज्यों से जो कि बहुत पूज्य है, परम गुरु ममुम. ये जो परम गुरु है हमारे, कौन है? गौड़पाद है. परम गुरु तो गोविंद भगवत्पाद है. परम गुरु ममम पाद पातैर्नतोस्मि. I do sastanga pranam by falling at his feet. Pada pataihi. Okay, I'm not just saying namaste or hello. No. Pada pateirnatosmi, I am doing namaskaram by falling at his feet. Who is he? Who has given the prescription for the humankind to get out of the empirical problems. Prajna Vaishakha Dha. Okay. Prajna Vaishakha Veda Chivita Jalanidhi Vedanabhruvantarastha Bhutan Nyalokya Magnan Avirata Janana Graha Ghore Samudra, a samudra which is full of the aquatic animals, that is samsara, for salvaging the humankind from that type of a ocean of samudra. Out of what? Karunya. Out of compassion. Shankara, Vasaspati says, you are also Karunamurti Shankara. Shankara says, my Paramaguru is Karunamurti. Okay.
Yastam pujyati pujyam parama guru mamum. Mamum to him is, to him pada pater natosmin. What is, Swamiji here, Anandagiri, a Gujarati who lived all most part of his life in Puri. He is telling Ammu. What is Ammu means to him, to this? Ammu means not a person who is standing there somewhere in Gujarat. No, he is telling right in front of me. Ammu means aparoksha tvena anubhutam. He is available right in front of me. To him I am giving namaskar. Now, namaskaram, pada pranati is not done to a person who is, I cannot do pada pranati to Swamiji by staying in Nalam. He is telling Amum to him. So that type of tradition, I am just coming. So Gaudapada incorporated this into Vedanta. Shankara is saluting Gaudapada. That Gaudapada is creating this tradition of Vedanta by incorporating everything. He's bringing things from everywhere. Okay. So Gaudapada did not develop the ideas further, and the only work he did was Mandukya Karika, the task of developing the system, entering into the debates with others, other religious and philosophical schools, and commenting on the basic texts of Indian religiosity. There is no religion. The Upanishad, Bhagavad Gita, and Sutras came to Shankara. Okay. Now, all of you know, I don't have to tell you that Shankara lived, Professor Singh already told, 788 to 820 CE. Okay. Like it will take more than 1 hour, 2 to 3 hours if I go on speaking about the date of Shankara. What is the date of Shankara? I have written about it. Okay. There are other accounts which say that Shankara was born in 77 BCE. There are others who say he was earlier. So let me not go to that type of a debate. But this is let us say that which year was born is not less important than what he has left behind. For me, उन्होंने जो छोड़ा है वो विषय है चर्चा की. कौन सी साल उन्होंने वो पैदा हुए, ये तो हमारे like that is insignificant for me. And you know that he was, like all of us know, he was born in Kerala, and father was Shivaguru, mother was Aryamba, did not have children. उनको बच्चा नहीं था, इसलिए वो वृषाचल शिव के पास जाके पूजा किए. They went to वृषाचल शिव in Trishur, and he was blessed with a child. And when he was blessed with a child, there was a condition. You want a child who will be famous but die young, but you want a child who may or may not become famous and live long. The father told, I want the first one. Let him live a short life, but let him be a celebrity. Okay. And father died, mother, the crocodile. I am not going into those details. Very minor details. But when mother died, the Shankara himself comes to do the funeral rites. Shankara comes to do the funeral rites. There is a lot of criticism against Shankara by the contemporary writers as well as the traditional writers. How can a sadhu do the funeral rites to his mother? Aurobindo does a caricature of Shankara, that Shankara, God laughs at Shankara thrice. When there is when the world is mithya, what is the necessity of creating matters? What is the necessity of writing bhashyas? And how can, when everything is mithya, mother is mithya, death is mithya, how can he do samskar? If Shankar were there, he should have shown us there is
there is Smriti अनुमोदन. स्मृति का अनुमोदन है कि जब एक ही बच्चा है को सन्यासी भी हो, वो उनको जाके मातृकर्म करना चाहिए. इसलिए there is nothing like without knowledge all these things happens. A lot of things happens because of ignorance. The many things have happened to us, and the white people thought that India does not have literature, India does not have history, India does not have philosophy, India does not have nothing. Therefore impose everything on them and make this race a incompetent, a race, those who would find themselves incapable of managing themselves. They say it is a burden of the white. Indians are the burden. Asians are the burden of them. See, such a great tradition has been belittled. Okay. So, and as you know, in Sureshwara says, Sureshwara, Shankara is one of the disciples, chief disciples from Mithila, your part of the country, Dr. Professor Singh. He says, Tambande Atrikulod Bhavam. Shankara was born in Atreya Gotra. Anyway, so as Swamiji has already told you that, like which year what happened to him. Okay. And initiated into the Vedic study at the 4 years. He studied 8 Vedas, and by 16 he wrote Bhashyas, and 32 left the world. Dvatrim se munirabhyagat. Ho gaya. Okay. That is Shankaracharya. 32 years of active life. Okay. And it is because of a prenomination that Shankara knew that his guru is there in or on the banks of the Narmada river. Shankara was a rebel from his childhood. Born in a Tantri, even Nambudris are called as Tantri now also. They do Tantra Puja. And many things get corrected by doing puja, according to Tantris. Even now, a lot of puja, Tantra, Jyotisha, Ayurveda. See, all these things are dead subjects for us today. It was alive. And Shankara family was practicing these things. And so Shankara goes to Narmada, and teacher was waiting. Who was the teacher? Govinda Bhagavat Pada was the teacher. What type of a teacher he was? There are 2 types of teacher in our tradition, Swamiji. One type of teacher, those who study, and those who don't feel the need to give this to others. They see, once you get jnanam, not only you are liberated, you don't see anybody not liberated. Everybody is liberated. Only there in avidya, you have gone out of avidya. Here the concept of karuna comes. Like the Plato's caveman, I always talk this example to my student, that the person sees the problem of others. Some people have no idea. In the sense, they don't feel the need. Therefore, our tradition talks about 2 types of teachers. One who teaches in silence. He cannot talk. There is no word supporting to his ideas to speak what he wants to speak. Another is he sees the problem and he is backed by the vocabulary, the diction of how to talk. And he speaks. There are 2 types. One is called as Vyuktita, another is called Samadhista. So, Gaudapada was a Vyuktita teacher. He debates with Buddhists, reveres Buddha, respects Buddha, but debates with them to prove that there is possibility of having
a substratal reality called the self as the ground, the reality, or the source of the creation, not like substratumless sunya as the source of the reality. This is the difference between the Sunyavada and Atmavada Upanishads. Now he goes to the teacher. The teacher was a samadhista. Gaudapada was a vyuthita. He wanted to, that is why he is writing Karunya. It is out of sheer karuna, compassion. Gaudapada writes, and to him I am prostrating. He writes, Shankara, I just read that. Now he comes to, now, sir, like Gaudapada he never met, but still he says that I am seeing him in front of me. Shankara. That is what Gaudapada, Anandagiri says. Now he comes to Narmada, and in Narmada, he knows the teacher is waiting for him. He goes to the teacher. Teacher is not talking. Only thing he asks is, who are you? It is a philosophical biography of Shankara, not a temporal hagiographical biography. So now he met Govinda, and Govinda, as I told you, everywhere, in the colophons you will find Govinda Bhagavat Pada Shishya Sri Shankaracharya Bhagavat Sri Shankaracharya Virechite. ऐसा लिखा है. And Shankara himself writes. This is Shankara's writing in the colophon. Everywhere he writes, I am the Govinda Bhagavat Pada Shishya. And in Viveka Chudamani, he says, Govindam Paramanandam Madgurum Pranatosmyaham. I am again doing pranama to whom? Govinda. And Govinda is, he has, all the prapancha has gone. He is in the prapancha, but prapancha is not in him. Am I making sense? So prapancha has ceased to be make the like affect his self. He is in prapancha, but he is in the world, but not of the world. He's a Siddha Prajna. He's a Samadhista yogi teacher, but waiting for some Shishya to come, who by seeing him, will know the Marma and save the Vedas. So now he says, who are you? Kastvam. Now, Sankara, happening in Narmada Omkareswar. I once went to a seminar. I told the Advaita Ganga in India has flowed from, जो अद्वैत का गंगा बहती है भारत की धरती के ऊपर, वो नर्मदा से बहती है. And it carried a lot of writing, because I gave all these like accounts of what has happened. All these, they themselves did not know that time. Now they know, because one of the great statesmen of our country, Shivraj Singh Ji Patil, has started Shankaranyas. I must tell everybody must go and see that place, how Shivraj Ji has done, great man in the country, I must say, of our times. Now, Shankara is meeting Govinda, and what is happening? Philosophical level. This is the 10 verses Shankara is telling who he is, and how to tell who you are. If Swamiji asks who you are, I'll say, Mr. I'm the teeth, I'm this, all these nonsense. See how Shankara says, brilliant introduction of Shankara in his own words. Okay, what is that? Na bhumir na toyam, na tejo na vayu, na kham tendriyam va, na tesam samuha, अनेकांतिकत्वात् सुयुक्तिक सिद्धिः तदेको शेषः विशिष्टः शिवः केवलोऽहम् तदेको विशिष्ट अवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्. This is what Shankara says.
न भूमिर्न वायु न तोयम न तेजो न वायु न खम नेन्द्रियम न तेषां समूहः अनेकान्तिकत्वात् सुसुप्त्यैक सिद्धिः तदेको वशिष्ठः अवशिष्टः शिवः केवलम्. I am nothing, I am the ekavasishtah, I am the left as one. Okay. So he is telling, I am English अंग्रेज में बोल रहा हूँ, I am not भूमि नहीं हूँ, अर्थ नहीं हूँ, पानी नहीं हूँ, हाँ, न तोयम, न तेजो, not fire, not air, न वायु, न खम, neither is space, neither am I of the faculties, any of the faculties, not I am the aggregate. The same Chatuskoti is bringing here. I am not any of these, as they are all non anekantikatvat, anekantavada. No, I am not. They are Jaina. No, I am proved, however, like in the soul state of susupti. I am is only known when I am in sleep. How do you know? After coming out of the sleep, time is not there. Otherwise, that one, the last, that which remains, when all these things are gone, ये सब को छोड़ देने पर जो रहता है वो मैं हूँ, मैं मंगल का मंगलमय हूँ. auspicious शिवा, शिवा means मंगल. So शिवा केवल है. So that is the philosophical way. Now comes, he gets the diksha, Guru gives him diksha, drushti diksha. There was nothing happened. Diksha ऐसे दृष्टि में हो गया, वो पास चले गए तो दृष्टि में हो गया. Beautifully written in many of the Shankara Digvijayas. I don't have time. I do not want to get into Shankara Digvijaya. That will be again a geography. Okay, as Swamiji has told, only traveled 32 years after this, went back on the. I have a hunch. I think Anantarandagiri's Shankara Digvijaya, which was edited by my professor, my guru, it writes that Shankara started writing Brahmasutra Bhashya on the banks of Narmada itself. Okay. And the tradition says, again, I am quoting what Swamiji, Ashtavarshe Chaturvedi, Dvadashe Sarvashastravit, Shodashe Krutavan Bhashyam, Dvatvinse Munirabhyat. हो गया. Okay. Now went around the country, and the first place to debate with people was none other than where you were all there, Mithila. He came to Mithila, and you know the story. Kumarila Bhatta, he heard about Kumarila Bhatta. Kumarila was a great Mimamsaka, one of the chief proponents of Mimamsa school after Jaimini, as far as history knows. And he came to here. And Kumarila, he met Kumarila. Kumarila told, Beta, very old he was, I have done a Guru Droha. I have studied Buddhism in Nalanda with great Buddhist masters, and I have written a text refuting all the Buddhist claims. So when you do such a, so the main purpose of coming to Nalanda and studying Buddhism was to refute Buddhism. Buddhism as well as Brahmanism are growing side by side in Mithila as it is happening in Gaya. This side Buddha, this side Karmakanda, that side Abhayadika Darsana, going side by side. So he came from Kerala. See, the country for Shankara is such a small country. We are telling that such a long country, no. Shankara writes Bhashya there. Tika is written in Mithila. Anandagiri writes there.
Puri. So how the communication? With all our communication, nobody knows who is Vachaspati Mishra, even in Mithila today. When I went for a seminar a few years, 2 years back, the people first time knew that what is Vachaspati Mishra, a railway station in his name. That's all they. But a misfortune that we have is these things are totally gone out of our mind memory. So Shankara went there, and as I told you, Shankara meets Mandana, sorry, Kumarila told, I have done Guru Vidroha, I have to, and the only prashchita for Guru Vidroha is immolation, I have to fall, die myself, sorry, by sacrificing myself into the fire, and this is the time now it is going to over. You do one thing, there is one brother-in-law that I have, you go to him, Mandana, he can stand by you in your debate, not anybody else. Goes to Mandana, and you know the story. Now comes Shankara Digvijay. I always tell this story to this audience. I have already told many times that Ubhay Bharati's wife, Mandana's wife, says that you have only defeated a part of our unity, that which Mandana stands for. Defeat myself. He asked intricate questions of man-woman relationship. Shankara did not know. I say it is a wrong, illicit superimposition on the historiography of Vedanta. Shankara never did this. Shankara has no requirement to learn Kama Shastra to defeat Ubhay Bharati, because all these things come in the domain of avidya. If Ubhay Bharati knows microbiology, Shankara would not go to have a degree in microbiology to come and defeat her. There are many things in Shankara Digvijay I have found out. Another day sometimes comes. I'll talk about it. Shankara did not do that, because everything is nothing but jnana, and the beginning. Everything is avidya. When everything is Shankara says, Satyanrute mithuni krutya naisargikoyam loka vyavahara. All this loka vyavahara is because of this. So Shankara did not do this. There are many things which are superimposed into Shankara's life which are not true, cannot be logically put. Shankara, what he did, he knew people are of different mental standards, caliber, intellectual caliber. 3 types of text Shankara wrote. One is Prasthana Traya Bhashya. This is for Uttama Adhikaris. The Uttama Adhikari, those who are really desirous of understanding the world, for them, Prasthana Traya Bhashya Shankara wrote, Bhagavad Gita Bhashya, Brahma Sutra Bhashya, and Upanishad Bhashya. For Madhyama Adhikari, Shankara wrote Upadesha Sahasri, Viveka Chudamani. I just quoted Viveka Chudamani, and the text is like that. And for Adhama, he wrote Stotras, Manisha Panchakam, all these things. Dasasloki, all Bhajagovinda, everything. So Shankara, like one of the greatest contribution of Shankara is to bring back all the types of worships to the fore, to resurrect them, the restoration of Sanmatas. 6 matas, main matas were there in our country, which were almost getting destroyed under the pressure of Buddhism and Jainism, those who did not believe in all these things. So Shankara resurrected. Sanmata Sthapakacharya. And one of the major things which I told in the beginning is Panchayatana Puja. Every house is a temple. Don't have to go to a temple. There is no temple. We don't believe in it. We are not the idol worshippers.
Friends, we worship the God in the idols. We are not idol worshippers. Because who is who is who is God for us? Shiva is the God. Who is Shiva? Earth is Shiva. Ekamreswara temple in Tamil Nadu, Kanchipura. The Mrittika Linga, Tiruvankaval, Uplinga, Jalalinga, Kalahasti, Baivalinga, Tiruvannamalai, Agnilinga, Chidambaram, Akasalinga. Where is in all these things, what is worshipped mainly is the Bhutas. Where is it? We are not idol worshippers. If they say that Hindus are the idol worshippers, wrong reading. Bad testimony. This is what Shankara did. Panchayatana Puja, every house is the center of religiosity. Okay. Everybody is the child of the divinity, divine. And one more thing that Shankara did, which was not there earlier. Shankara, a radical thinker. He started this Dasanami Sampradaya. In all probability, this Kumbha, the way it is organized today, it was because of Shankara. Okay, all the monks, Dasanami Sampradaya, he started, Dasanami Sampradaya must come to Kumbha now. So that is what. So that is Shankara. So Shankara's life is an epitome of sannyasa. It is not the renunciation of action. Please read Gita beautifully, The second chapter, third chapter, he says, Arjuna says, you are confusing me, Krishna. You are not telling me anything properly. Do this or do that. You are telling two things at a time. Tell me properly what I should do. You said that the karma should not be done. Now you are telling me to fight. It is the renunciation of the misunderstanding that one is an actor. It is not the renunciation of action. It is a Shankara's philosophical method. This is everywhere there. We write books because I have to be there in the university, I have to get a job, all these things. What is that books were written for? For making people understand that you are not the actor. One of the things I wanted to tell you, written by same Montana Mishra who becomes Sureshwara later on. Another lecture Swamiji asked me to speak. I'll talk about some Advaita tradition starting from Shankara. Today I'm going only with Shankara. Sureshwara was not accepted. Those days and nowadays also. If you are a married person, you are not if you become a sadhu, you are an inferior sadhu than those who are brahmachari sadhus. Like Purna brahmacharya, those who are maintained. So Sureshwara was not accepted by Shankara's other disciples. But Shankara, like such a great scholar, has become a Advaitin. So naturally the product will be great. Shankara thought the people will get better understanding because of Sureshwara. And he asked that you write a text and Sureshwara write Naiskarma Siddhi. I tell you Naiskarma Siddhi is not a renunciation of action. The renunciation of the misunderstanding that you are the actor. Okay? Kartrutva, not karma. Okay. So Sureshwara writes about Sureshwara in the Naiskarma Siddhi, I think third verse, he says, why am I writing this text? Is it for getting khyati, fame, पूजा, ख्याति लाभ और पूजा लाभ के लिए ग्रंथ को लिखता हूं और कुछ है इसका कारण? सुरेश्वर बोलते हैं नख्याति लाभ पूजार्थम ग्रंथोस्माभि विलिख्यते स्वबुद्धि पुरुषोध्यर्थम. I want to cleanse my mind. I want to, whatever I am presenting in the line of Advaita, done by my Guru, Paramaguru, all the tradition starting from the Upanishads. So, Nakhyati Labha Pujartham Granthosmabhi Vilikshate. स्वबुद्धि परिशुद्ध, तो मेरा बुद्धि को साफ करने के लिए, ठीक करने के लिए, कहा ब्रह्मविद निकषास्मसु
ये जो ब्रह्मविद को जो निकषा है, जो पत्थर है, उसमें क्या करके बाय रबिंग, brushing it with the Brahmavid Nikasha. I want to know whether I am doing right or what I am telling is I am not that. But I should be acting. Okay. The real experience that everything is one comes during his time. He brings everybody under one umbrella of it. You do whichever mata you are doing, no problem. But understand that you are the part of that whole, which is not other than you. Then only you can connect yourself to the last things. Okay. So that is why, that is why once I think Vivekananda told that the universally shared world view is Vedanta. Because how we like each other, if at all we like, not liking is a superimposition. Okay. And besides all these three, Shankar was a great tantric. Tantra means puja. Tantra means jnana. Philosophy is called as tantra. So Shankara, what is that? So Shankara writes Prapancha Shara Tantra. Many such things, Saundarya Lahari. Okay. And so many such other things. Okay. And as I told you in the beginning, Shankara's main agenda is to bring back the original teachings of the Upanishads to the mankind by taking away, eliminating all that is superimposed, even in the traditional schools like Samkhya, all that, Vaisheshika everywhere, Pasupata everywhere. I always tell what are the two things that Shankara does in his writings. Two things, Dvaita Khandana and Shruti Mandana. Dvaita stands in Samkhya. Okay. So this is all Shankara does. So that is why so Shankara himself says that Shankara himself says that how the what is that? Astika darsana must be the only darsana, where book is very much necessary, but not sufficient to understand. Okay. So in Shankara's poetry, so many, like Saundarya Lahari, one of the, where Shankara says, like, what he says, Saundarya Lahari was written by Shankara. Shankara, Shankara was the one who established the formlessness and made us to understand nothinglessness and brought the understanding of the self in and through everything that he spoke. He connected the holy spots of the countries by Dvadasa Jyotirlingas, 18 Shakti Pithas, 4 Vishnu Dhamas, you see, and created a pilgrim route. When I was young in Madras University, I was trying to make a map as to what are the places Shankara has traveled, how he would have traveled. Okay. So, in his legends, he has traveled from Kerala to Kashmir, Puri to Dwarka, Sringeri, Karnataka, and Kanchi. They say Kanchi is the last place he. Professor Singh, I will take another 5 minutes, not me. Okay. So, Thank you, sir. lot of Comfortably, you can take. Comfortably. Professor. Comfortably, you can take time. Yeah, another 10 minutes. Yeah. Okay. So Shankara is going from
Karnataka to Badri, in Uttarakhand, everywhere, Kanchi to Kashi, everywhere in the Himalaya. Oh, so much within such a short time. And with nothing at his disposal. Nothing at his disposal. He did not have a bank, he did not have a plane to travel from one place to another place. Only, so beautiful. So heart enchanting poetry he wrote. He says, he himself says that I am a Dravida. You see, Shankaras, I have written Swamiji about this particular thing. That what is the Arya and Dravida? Dravida and Arya are the like opposed to each other, or as it is being politically posed? I say no. It is Gauda and Dravida. I don't want to take much of your time. But Shankara says that I am a Dravida. Wow, the stuti, one stuti I wanted to tell you for you. So beautiful. Saundarya Lahari is a great text. It is Shankara says that if by practicing something you can handle the empirical problems, it is Saundarya. He says that goddess, मदर को कैसे लिखते हैं, मदर के बारे में, माँ के बारे में शंकर, मदर्स बॉडी, शरीर को वर्णना करते हैं शंकर. क्या क्या वो, what is that, the beautiful part of your body, your stana, the breast. See, what is breast? It is not a place of beauty, it is a place of place which is it is a place of sustenance. And sustenance what? My intellect is sustained in your breast. Intellect comes from your breast. Sankara. Tavastanyang manye tuhinagiri kanne purayataha vayahparavaraha paribahati sarasvataiva dayavatyaha dattam द्रविडशिशु रास्वाद्य तवयत कवीनाम प्रौढ़ानाम adani kamaniyaha kavaita. Shankara, this poetry which I am writing, O mother, what is the source? Source is your stana. Tavastanyang manne, your breast. What is, who are you? Tuhinagiri kanni, you are the Himalayas daughter. So, Payahpara Vara, you are the ocean of milk. Okay? Paribahati Saraswati, like Saraswati. Poetry, Saraswati, the river. Paribahati Saraswati. What is that? Dayavatyaha Dattam. Out of compassion you have given it. Mother gives, the child must grow. Okay? Dravida Sisu, I am the Dravida Sisu. Raswadya Tava. Payaha, by drinking your milk. Kavinam, Praudhanam, the best variety of poets. Ajani Kamaniyaha Kavaita, that type of poesy is being originated by the milk that you have given. How you have given? Dayavatyaha Tattam Dravida Sisu Raswadya Tavayat Kavinam Praudhanam Ajani Kamaniyaha Kavaita. That is what Shankara says. And Sureswara, his disciple, he says, you are not supposed to take the teacher's name. How much reverence for the teacher tradition. He says, Ebam Gaudaihi, Gaudapadachari, and Dravidaihi, Naha Asmakam, our Ebam Gaudaihi, Dravidair Naha, Ayamartha Pravasita. This meaning, this Advaita Buddhi, Dvaita Nasa Buddhi is given to us by these people who Gaudapadacharya and Dravidacharya. Okay. So that is what Shankara. So much devotion, they say devotion has no place. All the place devotion has in the literature. It is a philosophical biography.
If bhakti is not there, how the jnana will come? You must understanding will come only because of bhakti. One of our professors always told, understanding of the world will come when you have bhakti. If you don't have that, what will sustain you? Bhakti. Jnana is ultimate arrival. Therefore, he said, Vedanta is not about talking of the world, sorry, Brahman, but speaking about what is not Brahman. Other way also you can speak. So that is what is Shankara. So, Shankara, I will just come to the end of my talk by telling what happened to Shankara. Again in poetry, Kamaniyaha Kavaita, Kavitva. One poet says the Kavitva comes automatically. Even that I don't want to take much of your time about that, talking about that, but this is what poetry is. So Sohen Sankara, very fond of Himalaya and Ganga. When you go to now also Vishwanath temple, you find only the South Indians are in the queue, among very less South Indians, Gujaratis, all there, very less from this part of the country. Of course, there are people, not that less, but number is more. So, very fond of. He says, Annapurnashtaka. What is that? Swargadwara Kapata Patanagari Kashipuradhishwari Viksham Dehi. So, Swargadwara, Mokshadwara Kapata Patan. So, you open the door, close the door of the moksha, that avidya nasa. You do avidya. Nasa. So what should you give? Two things which will take away my avidya. What is that? Jnana and vairagya. Jnana vairagya siddhyartham bhiksham dehi javarvati. So this is what you give me. Jnana. If everything is there, if these two things are not there, you cannot be happy. With everything, if these two things there, life is a celebration. Shankara is talking about a life of celebration. India to celebrate, Jambu Dvipa to celebrate, mankind to celebrate. If this buddhi is not there, nobody can be happy. With this buddhi, celebration is automatic. 24 hours, you can enjoy what you have to the fullest extent. Last point I wanted to say. Again, Ganga. Again, Kashi. Kashi was fond of. He says, Goddess, when I pass away, Shankara says, there will be a celebration. It is not there will not everybody, nobody is there to cry. I don't have any son, the grandson, or nothing. So what will happen? Not Shankara is telling that. He's telling, I wish that my death will be an occasion for celebration. Shankara. I will be drinking water and my body will fall down. And God will happen. Prana Prayano Uchava. Uchava Swamiji is talking the word Uchava Shankara. There will be a celebration of my death. Prana, what is it? Shall I die? I will never die. There is no death for I. What is going to die? Prana. This prana will go and become Mahaprana. That is all will happen. So when you go somewhere, you celebrate going, na. Suppose I want to go to Tirtha, whole village will come and go and do this. Somebody will give me some asti to be like put in Sangam. Okay, immersed in Sangam. All that will happen now. So prana prayanochava, when prana will be departing, going, taking farewell, you go for a celebration. Where? Bhuyat bhaktir avichuta. On you, there will be no occasion where there should be no devotion. Avichuta bhakti होना चाहिए आपसे, गंगा जी माँ. Who are you? Harihara Dvaitatmika Saswati. You are the eternal flow of river, Jnana Ganga. What is that Jnana Ganga? Where Hari and Hara both have come together. You have come from the
Vishnu, Hari, and sustained by Hara. So Hari and Hara are Advaita in you, Advaita Buddhi everywhere. That is what Shankara. Okay. So this is what Advaita, Hari Hara Advaita Atmika Saswati. And one of the, I don't remember who told this, but I wanted to read this and end my talk. Shankara is not an ivory tower philosopher. He is a political sage. Please remember, the whole country became one during his time. None of the emperors by their sword wielding could do this. Engaging with and responding to historical context of his time. Through philosophy, poetry, and pilgrimage, he attempted to bind the subcontinent of India that was constantly referred to as Hindu, Buddhist, Jaina texts, as well as in the Vedic rituals of Sankalpa as Jambudvipa, the continent of Jambul tree, Bharatavarsa, the land of Bharata kings. Thank you, Swamiji, for giving me this opportunity. It was great to listen to myself speaking on Shankara. थैंक यू सर। अब हम स्वामी भावात्मानंद महाराज से निवेदन करते हैं थैंक यू। कि वार्ता को आगे बढ़ाते हुए जस्मीन जी भी ज्वाइन कर चुकी हैं। स्वामी भावात्मानंद महाराज कृपया वार्ता को आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे। हाँ सर, नमस्ते। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी ने बहुत ही सुंदर एक टॉक प्रेजेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने सारी चीजों को रखी और शंकर का इतिहास नहीं बल्कि दर्शन शास्त्र, अद्वैत दर्शन या अद्वैत दर्शन के इतिहास को भी उन्होंने रखा, और जिसमें उन्होंने बतलाया कि मैत्रेय नाथ, वसुबंधु, धर्म कीर्ति, नागार्जुन आदि से लेते हुए मैंने पूरे मैत्रेय नाथ यानी जैन दर्शन से बौद्ध दर्शन, उसमें भी अद्वैतवाद था। और बाद में आपने बतलाया कि भर्तृहरि जो शब्द अद्वैत की व्याख्या करते हैं अपने वाक्य पदीय में, उसकी भी आपने व्याख्या की। और इसके पश्चात फिर आप गौड़पाद पर आते हैं, उसकी अजातिवाद की व्याख्या करते हैं, फिर शंकर के विवर्तवाद की व्याख्या करते हैं। आपने एक अद्वैतवाद का पूरा एक इतिहास हमारे समक्ष रखा, और इतने ही रुचिकर ढंग से रखा, जिसके लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। और सर, इसमें मैं एक दो चीज मैं जानना चाहूंगा कि सर इसमें क्या माना जाए कि शंकर के जो गुरु, परम गुरु गौड़पाद, गोविंद पाद के पूर्व, तो गौड़पाद ने अपने शास्त्र में यानी मांडुक्य कारिका में जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया है, क्या वे शब्द बौद्ध के शब्द हैं, और क्या वे विचार भी बौद्ध के हैं या नहीं? सर एक ये एक छोटा सा और भी यह एक हुआ। और दूसरा यह कि शंकराचार्य ने जिस धर्म को प्रतिपादित किया, उस धर्म की व्याख्या आज के युग में एक नए ढंग से क्यों की गई? आपने यद्यपि आज के युग में उस धर्म की व्याख्या जैसे अरविंद स्वामी जी की बातें आपने नहीं की, लेकिन फिर भी उसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? सर इन दो चीजों को आप एकदम संक्षेप में कृपया हम लोगों के दर्शकों के की जानकारी के लिए रखें तो बड़ा ही उपकार होगा। और इसके पश्चात में फिर आगे अनुरोध करूंगा, हमारे आर के झा साहब हैं और भी बड़े बड़े विद्वान हैं, सभी विद्वान भी इस संबंध में 2-4 मिनट करके ही कम समय में बोलेंगे। मैं चाहूंगा मिश्रा जी से ही विशेष करके सुनना क्या क्या इनके सर के विचार हैं और शास्त्र के क्या क्या सम्मत विचार हैं। सर मिश्रा जी, गोदावरी जी। स्वामी जी बहुत बहुत आभारी हूँ आपको, उनके इतने अच्छे प्रश्न किया आपने। हमारा जो परंपरा है स्वामी जी, एक ही परंपरा है। ये जो ज्ञान का गंगा है वो उपनिषद से आती है। बुद्ध भी उनका एक क्या सहभागी है। ही इज ऑल्सो ए पार्टिसिपेंट इन दिस ट्रेडिशन। ही टेक्स द ट्रेडिशन when it is not catering to the needs of the people, when it is being like there is a hegemony getting into the tradition, then Buddha comes. Buddha says not only the hegemonistic or hegemonic people should be abandoned,
The text talking about the hegemony also should be abandoned. But the essence is not able to go it out of. स्वामी जी ने इसको बोला बहुत अच्छे से बोला था ढंग से. The tradition is being presented in the new bottle by the Buddha. Upanishad, he talking about Upanishad. Like same thing, but the name changes, Nagarjuna changes the name, and coming to Gaudapada, I think Gaudapada was a Buddhist, but a Vedic scholar becoming Buddhist and finding out there is so much of togetherness, so much of amity, so much of giving and taking. Therefore, it must be properly put into the people's mind with the Upanishads from which this tradition has come as a different tradition. ये भिन्न है, ये नहीं है, ये एक ही है. इसको बोलने के लिए उन्होंने वो ट्रेडिशन को ले लिया और उसको वैदिक ढंग से स्थापना किया. इसलिए वो बोलते हैं कि नैतद बुद्धेन भाषितम. ये बुद्ध ने बोला नहीं. Where is the problem? There are a lot of things to discuss about this, but Buddha, that is why the traditional Advaitins have written that Buddha has taken away the tradition and putting it in his own way. It is time for us to salvage that tradition. Shankara is doing that. And one more thing, a lot of fighting going around when the godlessness, textlessness came to the forefront of religiosity. It is the time when the textless traditions had no roots for their sustenance. They are nearly getting wiped out. All these Tantra traditions. Shankara is coming with a new format. Whatever you do has a meaning, but only thing is the understanding wise, one should not have so much of diversifications. It must be rooted in one. That is Atma. Everything is related to me, then only it becomes meaningful. That is what Shankara tries to put forth. And that is the newness in his presentation of Advaita. That everything has a place, but with the understanding should not be sacrificed in actions. Action should not affect understanding. This is the only major contribution of Shankara's philosophy. Understanding should not affect. So, action should not sacrifice understanding. These are the two things. Am I making sense? Thank you. This is all. Yeah. The amity between the two religions Gaudapada is bringing, but Shankara is telling this is not enough. We have to have a special identity. Shankara differs from Gaudapada. Shankara says that we wanted. You are Gaudapada, he takes Gaudapada. That is why he is telling Paramaguru Mamum Pada Pater Natosmi. He says, but he becomes a radical. He is a soft core and he is a hardcore Vedanta. I always say like that. Gaudapada is soft. He says Buddha can be Buddha. He does Namaskaram, salutes Buddha. But Shankara has no such thing. He says, no, they have not been properly put, not only to Buddha, to Sankhya, Vaisheshika, everybody. Next lecture, I will bring a little about all these things, how exactly he is handling. Dr. Jha has come. Namaste, Dr. Jha. Yes. Yes, please. May I ask one question? May I ask one question, sir? Vimal Shadil, may I ask you हाँ one question? Yeah, शांति please. साहब आइए. Please. Yes. Professor Sahab, what do you think the special feature of Advaitic doctrine that
Shankar, Bhagwan Shankar had brought about a new feather he added to the doctrine of Advaitic philosophy and implication. What is the typical, what makes him different from other acharyas? You have already mentioned about the long tradition of monistic tradition or non-dualistic tradition, right from Upanishads, then Buddhist tradition, Yogachar, and so this Shankaracharya, Samant, Bhadra you have mentioned. Well, and God part, of course. Then what is the special thing you think that Shankar contributed to the Advaitic philosophy? Is Okay, my question clear? is मैं not पूछना clear. चाहता हूँ कि शंकराचार्य However, ने शंकराचार्य ने वह क्या नया स्वरूप दिया है अद्वैत दर्शन right, में right, right. जो कि अन्य लोगों से उन्हें विभिन्न बनाया? आपकी दृष्टि में मैं अपने मत को बाद में बतलाऊंगा Huh. जो मुझे अपील So, करता है. like Shankara's teaching, if you in one sentence you ask me, I would say it is to work in the world of duality without without having the misunderstanding that we are working in duality. With the understanding of unity, we can work in the world of duality. The Bheda Buddhi Nasa should be the paradigm of our understanding, and that should not take away our active life in the world. That is what is Shankara's major contribution. All those who are propounding Veda are distancing one from another. A sustainable society, a sustainable humankind, I with myself and I with you and others, can only possible, harmony between all these things are possible when I understand the essence is one. But essence will not affect the vyavahara, the empirical, the phenomenal world activities. Therefore, the Advaita everywhere in understanding and action everywhere with understanding, with duality and understanding. That is Shankara's contribution. Uh, Frankly speaking, to me, what appeals to me is that of bhakti and upasana. These two ingredients in the Shankar Advait or monistic tradition, he brought about a new dimension to Advait philosophy. I think you may just imagine that very time, the bhakti tradition that was going on. लोगों में एक अगर यह बौद्ध मत जो है एक तरह से शंकर भी इंटेलेक्चुअलिज्म पर जाते तो उनका रूखा सूखा उतना अपील नहीं करता, लेकिन उन्होंने ईश्वर को या सगुण ब्रह्म को काफी ज्यादा स्थान दिया, जिसके कारण से वह लोगों को अपील किया और इसी के तहत विभिन्न देवी देवताओं के लिए उन्होंने जो स्तोत्र रचे, लगभग उसकी संख्या 100 है और इसमें एक नया कहिए कि एक डायमेंशन लाया है, चाहे शिव का हो, विष्णु का हो, गणेश हो, शक्ति का हो, मतलब ऑल टुगेदर दे आर ऑलमोस्ट 100 स्तोत्रस दैट ही कंपोज्ड और इसमें जो कहते हैं बड़ा कमाल का उन्होंने अद्वैत दर्शन में लाया और यहां तक कि यह विद्वानों ने भी कहा है कि द ड्युअलिटी जो इसके सगुण ब्रह्म के उपासना से आता है, ड्युअलिटी assumed for the sake of devotion is more beautiful than even non-duality. भक्त्यार्थ कल्पितम द्वैतम अद्वैतापि सुंदरम.
अद्वैत से भी सुंदर है वह। और यह जो सुंदरता प्रदान किया है शंकर ने, आप षटपदी को पढ़ेंगे जो विष्णु को डेडिकेटेड है। सत्यपि भेदापद में नाथ तवाहम नमाम की नस्वम सामुद्रोहि तरंग वचन समुद्रो न तारंग। ब्यूटीफुल कि ऐसा नहीं हमें और तुम में कोई भेद नहीं है, लेकिन भेद इस तरह का है जैसा कि समुद्र का तरंग कहते हैं, तरंग का समुद्र नहीं कहते हैं। What a beautiful exposition. So I think the goal of liberation, that is bhakti and upasana, that is beautiful feature that he brought about, Shankar brought about in the added to the Advait philosophy. That is my opinion, I think, as I have read. Thank you. Yeah, Vimal ji, thanks. Mr. ji, kindly. And later on, we shall invite Professor Sri R.K. Jha Sahab also. We have also Lalita Yadav Devi ji. She is also from Philosophy Department. Yeah, Mr. ji, please. मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। मिश्रा जी का पूरी बात मैं नहीं सुन सका, बड़ा अफसोस है। मैं कुछ इधर उधर के काम में व्यस्त हो गया। धन्यवाद ये उमेश बाबू को जो उन्होंने कहा रे अभी चल रहा है उनका भाषण, आप सुने नहीं। मैं धर भर करके लगाया, तब तक उनका ट्रेन छूट चुका था, लास्ट बोगी पकड़ाया, तो मैं महत्वपूर्ण बातों से चूक गया। लेकिन धन्यवाद, आपने उनका जो वो शंकर दिग्विजय से अपनी असहमति व्यक्त किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। शंकर दिग्विजय में जो कुछ भी बात कही गई है वह ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। There is no historical fact regarding the thing that has been described by Shankar by some person who has written Shankar Digvijay। और अन्य जो शंकर की स्तुतियों के बारे में आपने कहा, क्या कहना, वो जो तो अस्तन्यम वाली बात जो आप कह रहे थे, वो द्रविड़ शिशु पर विवाद है, whether he is Shankar or other person, it is not that is it. Yeah. लेकिन उसी के लास्ट सौंदर्य लहरी के सबसे लास्ट में जो उन्होंने लिखा, प्रदीप ज्वालाभिर दिवस कर नीराजन विधि तंत्रोप रचना स्वकीय इरंभो भी सलिल निधि सौभित्य करणम त्वया जननी बाचा स्तुति। माँ, यह जो कुछ भी कहा हूँ वह तुम्हारी ही वाणी है, मेरी वाणी कुछ नहीं। इस तरह उन्होंने अहंकार को entirely अहंकार has been abolished by him. There is nothing different between Shankar and the goddess mother, but everything, every word that has been uttered or written down was the word of the mother। एक जगह और उन्होंने कहा, सुभेदा गमज्ञे श्रुति ज्ञान गम्भे सुभेदा गमज्ञे महांतम न जानन्ति पारम तवाम्ब स्तुति कर्तुम इच्छामि ते तम भवामि। प्रमुखता किलाहम, मैं तुम्हारी स्तुति कर रहा हूँ, इससे बढ़कर के और मूर्खता क्या हो सकती है। मैं तुम्हारी स्तुति कर रहा हूँ, यह इससे बढ़कर के मूर्खता क्या हो सकती है। अब रह गई शंकर की जो विशेषता है। देखिए, दर्शन इज वन पार्ट। दर्शन के साथ यदि धर्म नहीं हो तो दर्शन लंगड़ा है, पंगु है। और यह बात आचार्य शंकर ने ही अपने संपूर्ण भाष्यों में दिखलाया। दे गो टुगेदर, धर्म और दर्शन गो टुगेदर। और तीसरी बात, उन्होंने संपूर्ण श्रुति की व्याख्या की, जिस श्रुति पर डिफरेंट दृष्टिकोण थे, सांख्य के, वैशेषिक के, न्याय के, इन लोगों के, सभी लोग वेद को मानते थे,
सांख्य भी वेद मानता है, वैशेषिक वेद मानता है, लेकिन उनके दृष्टिकोण अलग अलग थे। उन सभी दृष्टिकोणों को निराकरण करते हुए उसने जो उसका श्रुति का जो मूल तथ्य था, ठीक उन्होंने ठीक जो ठीक, कुछ भी कहा श्रुति से अलग कुछ नहीं कहा। बिल्कुल अगर हम बिल्कुल श्रुति के हाथ से उनका पर है, एक्सेप्ट ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद पता नहीं वो शंकर का है या शंकर के शिष्यों का है, मुझे उस पर आपत्ति है। अच्छा लेकिन सर झा जी, आप ईशावास्योपनिषद के बारे में एक दो सेंटेंस में आपको क्यों ऐसा लग रहा है, एक दो सेंटेंस में इसे बता दें तो हम लोग भी जान सकेंगे क्या आपका विचार है। एक दो तीन सेंटेंस में एकदम संक्षेप में, संक्षेप में बताता क्योंकि हूँ। हमारे बीच बहुत बहुत सारे श्रोता हैं, वक्ता भी हैं। मैं कृपया। कह देता हूँ, ईशावास्योपनिषद के 2 श्लोक पहले से ही है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माग्रधा कश्चित् धनम्। हाँ, और फिर वो कहा कुर्बन नवेह कर्माणि जीविके चतगुं समा एवं तैनान्यते तोस्ति क्या न क्या कर्म इसका लिप्यते। क्या इम्प्लीकेशन आप क्या चाहते हैं? इसमें क्या इन्होंने करनी है? ये कहा कि ये जो श्लोक है वह अज्ञानियों के लिए, ठीक। ये श्लोक कुर्बन नवेह कर्माणि जी। देखिए वो थोड़ा रिजिड हो जाते थे, जो ज्ञान और कर्म का समुच्चय हो ही नहीं सकता, वह दिन और रात की तरह अलग है। और इसीलिए कुर्बन नवे कर्माणि जिस कुर्बन नवे कर्माणि की पूरी व्याख्या गीता है, उसी में वो कहते हैं यह एब्सोल्युटली अज्ञानियों के लिए है। और वह जो ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माग्रधा कश्चित् धनम्, वह जो है वह ज्ञानियों के लिए है। ये जो है ठीक। उन्हीं शंकराचार्य के तैत्रीय उपनिषद भाष्य पढ़ लीजिए, उसी शंकराचार्य के बृहदारण्यक उपनिषद के 4:22 का भाष्य पढ़ लीजिए, तब पता चलेगा उन्होंने ईशावास्योपनिषद के दोनों श्लोकों को सही ढंग से व्याख्या किया। अच्छा, इस संदर्भ में हम लोग और कुछ गोदावरी जी, इस संदर्भ में हम लोग अगले क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। करूंगा। ये आपने बोल के रखा सर, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे बीच ललिता जी, यदि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, महाशंकर जी हैं, विजय कुमार है, यदि और भी जो है कृपया बोल सकते हैं। कृपया, देवेंद्र बाबू हैं, अरुणेंद्र राय हैं। हमारी बात ललिता जी अपना माइक ऑन कर लें। ललिता जी अपना माइक ऑन कर लें। जी मैडम, मोस्ट वेलकम, बोलिए। हमारे विद्वान और नमन करती हूँ। मिश्रा जी इतना गहन विश्लेषण किए हैं शंकराचार्य का, इसमें से थोड़ा सा ही मैं निकाल के देखना चाहती हूँ या समझना चाहती हूँ कि प्रछन्न बौद्ध क्यों कहा गया शंकराचार्य। बस एक ही मेरा एक जिज्ञासा है, प्रछन्न बौद्ध क्यों कहा गया, क्या क्या उनके इम्प्लीकेशंस हैं। और आपको आश्चर्य हो गया सर, मेरा घर भी सहरसा जिला की जगह की हूँ। मेरे को समझ में आया नहीं, सुना ही नहीं दिया। समझी प्रश्न क्या था मैडम? हाँ ललिता जी, एक सेंटेंस में संक्षेप में आप अपने प्रश्न को पुनः रख दें। नहीं सुना ही नहीं देता, थोड़ा लाउडली, थोड़ा सर मैं ऊंची स्वर में बोल। अद्वैत वेदांत के बारे में मिश्रा जी को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम, कि बहुत गहन अध्ययन और विश्लेषण अच्छा से वैज्ञानिक विश्लेषण किए हो, क्योंकि हम लोग संस्कृत के उतने है नहीं, कुछ कुछ समझ लेते हैं, लेकिन ये जानना चाहते हैं शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध क्यों कहा गया। शंकराचार्य तो बौद्ध उन्हें कहा गया, क्यों कहा गया, बौद्ध क्यों कहा, प्रच्छन्न बौद्ध क्यों कहा गया? अच्छा, वो बढ़िया प्रश्न किया मैडम, आपने बहुत अच्छा वाला प्रश्न किया। लाइक
मेरा जो समझ है मैडम, एक तो ये है कि प्रच्छन्न बौद्ध कहने का हमको समर्थन करने में कोई लाइक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एक्सेप्टिंग, क्योंकि जो बुद्ध ने जो अद्वैत को लिया था, अद्वैतवाद के बारे में बात करते हैं, शंकर में वो ही बोलते हैं प्रच्छन्न नहीं है, उद्भूत बौद्ध है वो। बुद्धिज्म को फॉर्मेट दे देते हैं शंकर ने। ये बुद्धिज्म प्रॉपरली लोगों के पास पहुंचना चाहिए, तो इसे 4-5 रास्ता देकर के पहुंच नहीं सकते। ललिता जी अपना माइक ऑफ कर लें। ललिता जी निवेदन है, माइक ऑफ कर लें। थैंक यू। लाइक वेद को सामने लाना, वेद का जो तथ्य है, भारत का जो वेद का जो गरिमा है, वो लोगों के पास लाने के लिए शंकर जी ने बहुत प्रचेष्टा किया। एंड हाउ इट विल कम बाय एक्सेप्टिंग certain things that Buddha has told and also rejecting certain things that Buddha has told. Basic philosophically they are not different. He is talking about Advaita. Nagarjuna says, I am the best speaker, I am the spokesperson of the Buddha. If Nagarjuna is the best spokesperson of the Buddha, then Shankara is inheriting the same Advaita tradition, and where from that Advaita comes to Nagarjuna, Upanishad is the source. So शंकर को जो प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि वो सेम ट्रेडिशन को वेद के माध्यम से ले आते। इट इज ए क्रिटिसिज्म मैडम, नॉट एन एक्सेप्टेबल क्रिटिसिज्म, बट इफ वी अंडरस्टैंड he was also an inheritor of the Buddha. Therefore, my proposition is we cannot divide Buddhism or divorce Buddhism from Indian platform, format of religiosity. It is a part of our being. So much, madam, आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि ये तो शंकर जी ने तो बुद्ध के ऊपर इतनी बोला नहीं, वाचस्पति मिश्र ने क्या क्या लिखा कि शंकर लाइक हर थिंकर को वाचस्पति मिश्र ने लाके समझने के लिए कोशिश करते हैं। डू यू डू दैट फॉर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम? बिकॉज दे आर ए पार्ट ऑफ आवर बीइंग, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर. It is a, I would say one word, madam. I don't know that Dr. Jha will agree. It is a religious philosophical politics. My thinking is better, and Shankara has wider acceptability because madam, Buddhism, what is happening in Buddhism? सर्ववाद ठीक है, विज्ञानवाद ठीक है, शून्यवाद ठीक है, कौन सा ठीक है? बाह्यार्थवाद ठीक है, कौन सा ठीक है? 5 प्रकार के मत देके can you sustain a philosophy with 5 views as the core views? You cannot. Shankara is telling, let us have one view. What is that view? Advaita. Like this is the greatness of Shankara. Mishra, so from this point of view, which you described, and that is the tradition of Advaitavada, beginning from Vedas, Upanishads, to Jainism, Buddhism, it is all the same, explaining Advaitavada in different ways. Yes. And so Swamiji says that it is one tradition. So we should not quarrel over that, and that also exactly. That this is a great contribution of Swami Vivekananda. Yes. No doubt. एक मिनट मैं कुछ कहना चाहूंगा. And you also said that this is not divorced. Buddhism should not be accepted as divorced from Indian tradition. एक मिनट मैं कुछ कहना चाहूंगा. जिस किसी भी व्यक्ति ने प्रच्छन्न बौद्ध का आचार्य शंकर को, उन्होंने न तो बुद्धिज्म को समझा, न तो आचार्य शंकर को समझा. करेक्ट. ये आचार्य शंकर को समझे होते और श्रुति को समझा होता, महात्मा बुद्ध के ओरिजिनल टेक्स्ट के को समझा होता, तो ये बात नहीं कही होती. गंगा की धारा अगर चल रही है, क्या कहते हैं, गंगोत्री से, और कोई उसे हरिद्वार में पिकअप करे
और कोई काशी में पिकअप करे, है तो गंगा की धारा ही ना। ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो श्रुति की प्रवाहित ज्ञान गंगा है, उसी प्रवाहित ज्ञान गंगा को महात्मा बुद्ध ने कहा, उसी प्रवाहित ज्ञान गंगा को महावीर जैन ने कहा, और उसी प्रवाहित ज्ञान गंगा को आचार्य शंकर ने कहा। तो प्रच्छन्न उपनिषद भी वो महात्मा बुद्ध हैं, जो बुद्धिस्ट, सो कॉल्ड बुद्धिस्ट कहते हैं, वे पहले यह समझे जो महात्मा बुद्ध उपनिषद से और वेद से डिफरेंट नहीं थे। वेरी गुड। पुराने विद्वानों का भी यही विचार है। लास्ट में हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन भी यही मानते हैं, और बुद्धिज्म पर जो जिनके पूरे पुराने इतिहास हैं, वह भी यही मानते हैं कि हिंदुइज्म का ही एक ट्रेडिशन है, इंटरप्रेटेड न्यू वे इन ए बेटर वे। बहुत बहुत धन्यवाद किशा साहब, मिश्रा जी, ललिता जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा और आपने इस चर्चा को आगे बढ़ाया। और यदि कोई एक आध प्रश्न और कर सके तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा हम प्रोफेसर SNP सिंह को रिक्वेस्ट करेंगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय महाशंकर प्रसाद जी, हमारे विवेकानंद स्टडी सर्किल के बड़े ही वरिष्ठ सदस्य हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वे धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने की कृपा करें और हमारे आए हुए सभी अतिथि और मुख्य वक्ता को धन्यवाद ज्ञापन करने की कृपा करेंगे। आदरणीय महाशंकर प्रसाद जी। महाशंकर जी का माइक। हेलो, महाशंकर जी का जी सबों को प्रणाम। हाँ जी थैंक यू, बोलिए। सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर गोदावरी मिश्रा जी, जो प्रोफेसर एंड डीन स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के हैं, इन्होंने जो शंकराचार्य, आपकी छवि नहीं दिखाई पड़ रही है, कृपया इस पटल पर अपनी छवि दिखाएं। ठीक है सर, अब ठीक नहीं है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, फोटो नहीं आ रहा है। फोटो नहीं आ रहा, टेक्निकल कारण से फोटो नहीं आ रहा है, वक्तव्य हो। ओके ओके, हाँ वक्तव्य, महाशंकर आप वक्तव्य दीजिए। फोटो नहीं आ रहा है टेक्निकल कारण से। आवाज जा रही है सर? हाँ आ रही है, आप वक्तव्य दें। जी 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 जी, सादर प्रणाम। सर्वप्रथम आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर गोदावरी मिश्रा जी, जिन्होंने शंकराचार्य के जीवन और उनके संदेश को बड़े ही सरल, भले ही वो अंग्रेजी में अपने भाषण को दिए, लेकिन बड़ा ही ग्राह्य, यानी सबको समझने लायक भाषा उनकी थी, और हर किसी के दिल में निश्चित रूप से शंकराचार्य के प्रति और उनके संदेशों को लोग बैठा करके सुने हैं और बड़े ध्यान से सुने हैं इस बात को। उनके वक्तव्य पर जो इंटरप्शन दिए हैं हमारे RK झा साहब और प्रोफेसर ललिता जी, और साथ ही डॉक्टर विमल कुमार सांडिल जी पटना से, इन्होंने इस कार्यक्रम को बड़े ही रोचक ढंग से अपने प्रश्नों के माध्यम से जो किया, और गोदावरी मिश्रा जी इसको बड़े ही सरल भाव से समझाने का प्रयास किया। स्वामी भवात्मानंद महाराज जी तो इसको और भी स्पष्ट करते गए हर बिंदु को, ताकि जो है सो मैंने हर किसी को समझ में आ सके। क्योंकि मिश्रा जी अंग्रेजी में बोले हैं, हमको लगता है कि बहुत से लोग जो श्रोता लोग थे नहीं समझ सके होंगे, लेकिन इन लोगों की टीका टिप्पणी और महात्मा जी के द्वारा समझाने के फलस्वरूप हर कोई इसको बढ़िया ढंग से समझ सके हैं। मैं धन्यवाद देता हूं स्वामी भवात्मानंद जी महाराज का, जिन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम को इस स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल के द्वारा जो आयोजित है, ये नेशनल वेबिनार, जिसमें सभी हम कोई जुड़ते हैं और हर रविवार के दिन इस तरह के टॉपिक लाते हैं, ताकि हम श्रोताओं को वेद के बारे में, सनातन धर्म के बारे में या अन्य विभिन्न प्रकार के धर्मों के बारे में हर किसी को जानकारी मिलती है और हम सब लाभान्वित होते हैं। हम धन्यवाद देते हैं श्री SNP सिंह साहब को,
जिन्होंने स्टडी सर्किल के डायरेक्टर के रूप में कहें, कोऑर्डिनेटर के रूप में कहें, या उसके संचालन करते हैं और साथ ही साथ इस वेबिनार के भी संचालक होते हैं, उन्होंने अपने वक्तव्यों से, अपनी बातों से, अपने संचालन के माध्यम से हम सबों को काफी प्रभावित करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। आज तो नहीं जुट पाए हमारे प्रोफेसर आरसी सिन्हा साहब जो अध्यक्षता करते हैं हमारे इस वेबिनार के, उनको भी मैं यहाँ से धन्यवाद दे रहा हूँ। साथ ही हमारे स्टडी सर्किल के विजय कुमार प्रसाद सिंह और साथ ही हमारे ये रामनाथ गुप्ता जी जुड़े हैं और देवेंद्र कुमार भी जुड़े हैं, केशव कुमार भी जुड़े हैं। इन सभी जो विवेकानंद स्टडी सर्किल के सदस्य हैं, उन सबों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक धन्यवाद देता हूं। साथ ही इसके अलावा जुड़ने वाले सुधांशु शेखर जी मधुपुरा से जुड़े हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात तिवारी जी जो पटना से जुड़े हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत मिश्रा भी पटना से जुड़े हैं, उन्हें बहुत धन्यवाद। अरुणेंद्र जी भी जुड़े हैं। इसके अलावा दयानंद मिश्रा जी भी हमारे बीच जुड़े हैं और साथ ही उनका हम लोग वक्तव्य कई बार सुन चुके हैं, आश्रम में भी वे पधार चुके हैं हमारे मुजफ्फरपुर में, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक नालंदा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट भी जिनका नाम शायद गुंडाना या जो कुछ था, वो भी जुड़ी हुई थी, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर उमेश कुमार श्रीवास्तव जी जो हम लोगों के बीच बराबर आया करते हैं, पटना से जुड़े हुए थे, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही चूंकि मैं मोबाइल से जुड़ता हूं, इसलिए छोटे स्क्रीन पर बहुत कम लोगों की पिक्चर आती है, नाम आती है। अगर कोई छूट गए हो, उन्हें भी अपनी ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम हमेशा होते रहेंगे और हम सभी लाभान्वित होते रहेंगे। धन्यवाद सर। SNP सिंह साहब अपना इसको समाप्त करें। बहुत 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 धन्यवाद महाशंकर जी। हमारे स्टडी सर्किल के नियमित पार्टिसिपेंट राकेश कुमार जी भी ज्वाइन किए, उनको भी धन्यवाद। विश्वंभर महाराज रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी हैं, हमारे कार्यक्रम का नेट मैनेजमेंट वही करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उनकी टीम को गुंजन राठौर भी जुड़ी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर, उनको भी बहुत धन्यवाद। लक्ष्य चौहान भी जुड़े थे नालंदा से। जसमीन शेफर भी नालंदा से जुड़ी थी, उनको भी बहुत धन्यवाद। और आदरणीय ललिता देवी जी ने कार्यक्रम में अपना वक्तव्य देकर इसके हम लोगों का ज्ञानवर्धन कराया, इसके लिए आदरणीय ललिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सीमा सरकार जी भी हमारे कार्यक्रम में नियमित जुड़ती हैं, उनको भी धन्यवाद। और अन्य सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वामी भावात्मानंद महाराज से निवेदन है कि आगे के कार्यक्रमों के बारे में कोई अगर सूचना हो तो हम लोग को देने की कृपा करेंगे। अगला कार्यक्रम प्रोफेसर कीर्ति झा पटना विमेंस कॉलेज का होगा। उनसे एक सब्जेक्ट मैंने लिया है, अभी सब्जेक्ट की चर्चा नहीं करूंगा। फाइनल करने के बाद 2-4-5 दिनों के बाद मैं बृहस्पति या शुक्रवार को मैं इसकी सूचना दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू महाराज। तो हमारा और मिश्रा जी से और अनुरोध है, एक और भी क्लास इस पर होना चाहिए। पर्टिकुलर टॉपिक सर आप देंगे, आप अपने टॉपिक के अनुसार शंकर पर आप एक और क्लास लेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मिश्रा साहब ने अपनी सहमति दी, इसके लिए मिश्रा साहब को हम भेजूंगा आपको सर। हाँ, स्टडी सर्किल के सभी सदस्यों की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। और अब हमारा कार्यक्रम संपूर्ण हो चुका है, इसलिए हम अपने कार्यक्रम को संपन्न घोषित करते हैं। धन्यवाद। राधा राम कृष्ण की जय। बहुत अच्छा।